Standard 11, Subject English, Poem number 3, The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. So in the second episode, we are going to discuss the poetic devices used in this poem. So in the first episode, we have discussed about the central theme of the poem, the stanzas, and the central concepts of all the stanzas of the poem. Now, the poetic devices. So first of all, personification is here used. The rain has been personified as it has been given a voice in the poem. सेकंड, मेटाफोर, इनका भी प्रयोजन इसने राइटर ने यहां पर किया है. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. द पोएट यूजेस ए मेटाफोर टू कंपेयर हाउ द रेन लीव्स द ग्राउंड टू कम बैक टू द ग्राउंड, गिविंग बैक टू इट मच लाइक ए पर्सन who leaves its home only to come back after fulfilling its journey. तो इसी तरह यहां पर मेटाफोर का प्रयोजन है. और इसके बाद थर्ड वन, पैरेललिज्म और द सिमिली का भी उपयोग किया है. इन द लास्ट टू लाइन्स द पोएट हैज ड्रॉन अ पैरेलल बिटवीन द रेन एंड द सॉन्ग ऑफ अ पोएट. तो इस तरह से यहां पर सिमिली का और द पैरेलल का प्रयोजन किया है. हाइपरबोल, bottomless sea is an example of the hyperbole. The poet describes sea as a bottomless, which is an exaggeration statement to bring out the desired effect. तो यहां पर थोड़ा चढ़ा बढ़ाकर बात करने का प्रयास किया है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जो उनको कहना है वो मैसेज हम समझ जाए, इसके लिए यहां पर इसका इन्होंने हाइपरबोल का प्रयोजन किया है. इमेजरी, इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉफ्ट फैलिंग shower gives the reader an image of gentle rain or drizzle. During the dialogue between the poet and the rain, it creates an image of showers of drops of water falling down from the heavens to earth and infusing it with greenery, purity and beauty. So यहां पर पूरे पोएम के अंदर ये सभी जो डिवाइसेस थी इनका प्रयोजन किया है. नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक. आपको ये सभी बातें अपनी फेयर बुक के अंदर लिख लेनी है. सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, पोएटिक डिवाइसेस, इनको भी लिख लेना है और क्वेश्चंस एंड आंसर्स को भी लिख लेना है, ताकि कोई भी यूनिट टेस्ट लोकल या बोर्ड की आए तब आपको ये काम आए. इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम. हु डू दे बिलोंग टू? विच लाइनेस इंडिकेट्स दीज? आंसर, द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन presents a dialogue between the poet and the rain itself. In this poem, the poet asks rain who it is. The poet gets an answer as the rain itself gives its introduction. Hence, the two voices in the poem are those of the rain itself and the poet. There are two. In the poet's voice, and who art thou, said to the soft falling shower.
in the voice of the rain, and I am the poem of the earth, said the voice of the rain. तो ये दो आवाज यहाँ पर सुनने को मिलती है. यहाँ पर ये दोनों के बीच का डायलॉग है. यहाँ सेकंड क्वेश्चन, what does the phrase strange to tell means? Answer, the phrase expresses the poet's surprise at the rain's ability to reply in words. The belief is that rain cannot speak like living beings. The belief is that rain cannot speak like living beings. The poet believes that the readers will also find it surprising and weird that the rain should speak and answer the poet's questions. Third question. There is a parallel drawn between rain and the music. Which word indicates this? Explain the similarity between the two. Answer, the last two lines of the poem, into bracket, indicates the parallel drawn between rain and music. Here it is called song, as a song always has music associated with it. In the lines, the poet observes that the life cycle of rain and a song are like, both are the like-alike. The song issues from the singer and travels to reach other. It wanders, and whether heard and enjoyed or not, eventually returns to its creator with all due love. Similarly, rain originates from earth, and after fulfilling its role of spreading beauty and purity, returns to its origins. Both are perpetual in nature. Moreover, the sound of the soft falling rain is in itself a kind of music. इसके बाद fifth question, why are the last two lines put within brackets? The last two lines of the poem have been put within brackets as they do not form a part of the conversation between the poet and the rain. The lines in the brackets indicates the reflections, observations and thought of the poet. He makes observations about the life course of song and draws similarities between the life cycle of a song and the rain. So यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस आंसर आपको अपनी फेयरबुक के अंदर लिख लेने हैं, और जो जो डिफिकल्टीज आपको महसूस हो तो उनको आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है. तो अपनी फेयरबुक के अंदर ये सब कंप्लीट रखना, जब भी हम कहे तब आपको सबमिट करवाना रहेगा. ओके, सो हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर. थैंक यू वेरी मच.